Hello everyone, how are you all? I hope you are all good. So students, in this video we will be discussing important current affairs for 8th of October. The session will be quite interesting and important, so stay tuned with us till the end. In this video we are talking about Bhupendra Yadav ji, who presided over the Wildlife Week 2025 celebration. Then we will be talking about Kolkata, that became India's safest city for the 4th time. It is the capital of West Bengal. Then we will be talking about 150 or 1500 crore rupees critical mineral recycling incentive scheme that has been recently launched. Then we will be talking about a national conference on land administration and disaster management that was held where in Gandhinagar, Gujarat. All these things and many more will be discussed in detail, so stay tuned with us till the end, students. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code VIKAS10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. Let's start with national affairs. We are talking about the 71st National Wildlife Week. It was held from 2nd to 8th of October, right? And Bhupendra Yadav, who is our Union Minister of Environment, Forest and Climate Change, he presided here over this National Wildlife Week. That is the 71st edition of the National Wildlife Week. What is the location? Where was this event held? This was held at the Hari Singh Auditorium at the Indira Gandhi National Forest Academy of the Foreign Research Institute that is located in Hyderabad, Uttarakhand. This itself is a question that where is the Forest Research Institute located? The campus is located in Dehradun, Uttarakhand. Then there is a theme here, students, for this National Wildlife Week. Theme being human wildlife coexistence. As the theme suggests, that is both humans and the wildlife, they should coexist together, right, in a community and in a sustainable manner. During this only multiple initiatives were launched, that is the 5 national projects for species conservation, they were launched here. Then 4 national level action plans for specific species estimation, right, that is what are the species in a particular area and what is the population of that species, they were launched here. Then inauguration of the SFS officers mess, that is your Union Minister has inaugurated this officers mess, SFS officers mess, at the Central Academy for State Forest Services in Coimbatore, Tamil Nadu, and also the conclusion on the National Hackathon on the HWC coexistence, that is the hackathon that witnessed the participation of 420 young innovators from 75 institutions across 20 states and union territories. What is this hackathon? Where a problem statement is given and the teams, they work upon that problem statement, they find the solution, and the team that is having the best solution, they are even provided with investments, they are provided with various opportunities to grow, mentorship in that particular field, and also incubation if required. Correct. So here remember, important thing is Bhupendra Yadav ji, he presided over this 71st edition of the National Wildlife Week, observed from 7th to 8th of October. What is the location where this was held? At the Forest Research Institute campus that is located in Dehradun, Uttarakhand, and the theme on which this week was observed. Then next question, if I ask you, Metri 2.0, this was launched. This is the second version of the Metri. The focus of this is on the agri-innovation, on the agri-tech sector, on the agriculture technology growth together, right? So this Metri 2.0 was launched, and it is India and Brazil. They together have launched this Metri 2.0. If we talk about our India also partnered with Morocco, and an MOU was signed here. And this was for what? This was for defense cooperation. This was for defense cooperation. Right, students? Take a note of this. This is important. Then apart from this, remember, recently, Madgaon Dock Shipbuilders Limited, they have recently signed a memorandum of understanding with Tamil Nadu government, and it is to develop world-class green shipyard facility under Amrit Kal Maritime Vision of 2047. Then it is Government of India. They have partnered with Zepto. And why this partnership was? This was to enhance the employment in the particular sector, to promote the gig economy jobs. Right. Then apart from this, it is the 19th edition of the National Jamboree.
right? Which state hosted it? It was hosted by Uttar Pradesh. Right, students, so take a note of this. So we talked about Wildlife Week 2025 celebration in Dehradun, Uttarakhand at Forest Research Institute, presided over by Mohan Yadav, our Union Minister of Environment, Forest and Climate Change. Next is NCRB. What is this NCRB? National Crime Records Bureau. They have released the Crime in India 2023 report, where Kolkata became India's safest city for the fourth time. Where is Kolkata? It is the capital of West Bengal, right? So direct question, which is the safest city for India? It is Kolkata. That is the capital of West Bengal, right? Then question can be asked, which is the most unsafe city of India? It is Kochi. Kochi, that is in Kerala, is the most unsafe city in India, correct? And here you can see some numbers were also given, where the safest city is at 83.9, whereas the unsafest city of India is at 3192.4 point. Right, students, take a note of this. Another thing, this was the 71st edition of the Crimes in India 2023 report released by NCRB. Then apart from this, our country India, we were elected to Interpol. Right, we were elected to the Interpol Asian Committee that will strengthen the regional law enforcement in India. Apart from this, recently Kiran Desai, right, returns to the Booker Prize shortlist for 2025, and this is for the novel The Loneliness of Sonia and Sunny. Then apart from this, students, recently from India, 2 wetlands were added to the Ramsar sites, right? Let me write here. From India, 2 sites were added to the Ramsar list. These are the 2 wetlands. These 2 wetlands are located in Odisha. What are the name of those wetlands? First is your Gokul Jalashay, and second is Udaipur Jheel. So these are the 2 wetlands from Odisha that were added to the Ramsar site list. And from India, now the total number of Ramsar sites from India is 93. Another important question. Next, here you can see if the unsafest city, right? This is data is for the unsafe city of India, and Kochi, Kerala stands at 1st position, New Delhi 2nd position, Surat 3rd, 4th Jaipur, and 5th Patna. Next students, we are talking about Ministry of Mines. So recently Ministry of Mines, they have issued a new guidelines, and this is basically what they are doing. They are now promoting investment of almost 1500 crore rupees for critical mineral recycling, right? And this is basically an incentive scheme. What this incentive scheme will do is, this will promote more entrepreneurs, more businesses to come into the recycling of the critical minerals. Critical minerals, they are important for the economic development of India. Hence, we need these economic critical minerals, right? And they are hard to come by, right? And in today's world, every technology, every gadget use these critical minerals, right? So recently Government of India, what they are doing is, they are focusing on enhancing the recycling capacity of these critical minerals, and for this 1,500 crore rupees amount has been allocated for this incentive scheme, and this scheme is open for the application starting from 2nd of October till 1st of April next year till 2026, right? So take a note of this. Important students. Next students, remember recently we know that for H1B visa, $1 lakh fees was established by United States of America. In retaliation, China, they have launched K visa, right? And this will be attracting the Indian tech workers to China now, right? So this has been opened by them, and this will be attracting young STEM professionals, science, technology, engineering, and mathematics professionals. Also, when USA imposed 100% duty on the pharmaceutical sectors of India, at that time China declared that the duty that they have imposed earlier of 30% on Indian pharmaceutical products, that has been eliminated and narrowed down to 0%. Now China will be buying those pharmaceutical products from India now, right? So a good thing for India.
Next is National Conference on Land Administration and Disaster Management was held where? In Gandhinagar, Gujarat. Another important question. I repeat, National Conference on Land Administration and Disaster Management. It was held where? It was held in Gandhinagar, Gujarat. Very important. Now, what is this conference all about? What is the aim of this conference, right? As the name suggests, disaster management, right? Focus will be on how can we mitigate the disasters, how can we be prepared for the disasters ahead, what are the things that we need to take care of, right? What are the proper processes, guidelines, standard operating procedures we need to follow, and how can we prepared ahead. Correct. So this was a 2-day long conference. This was held on 3rd and 4th of October, right? And it was on exchanging the and having the experts advice on the insights of improving the land administration and strengthening disaster management. Who was the chief guest here? This question can be asked. Bhupendra Patel, the Chief Minister of Gujarat, was the chief guest here, right? And during this only you can see here RO Dairy mobile application and ILA system was launched. This RO Dairy mobile application, this is basically will digitize the daily workloads of the daily workers, inspections, and help in the real-time monitoring. If we talk about this ILA system, that is your integrated land administration system. This is a new digital platform that unifies the registration, resurvey, GIS mapping, revenue court management into a single interface. Then here distribution of Swamita cards were there. What is Swamita? This full form can be asked of Swamita. Swamita stands for Survey of Villages and Mapping with Improved Technology in Village Areas. Hence Swamita. Right there, Swamita cards were recently distributed. Then also an MOU was set up for setting up a Center of Excellence here. Right, this is for the establishment of Center of Excellence with various academic institutions in the Gujarat state, in the Gandhinagar, Gujarat. Right, so these are the news that you need to remember here, correct, for Gandhinagar, Gujarat. Okay, if we are talking about Gujarat only, remember Tata Advanced Systems Limited, they are setting up a semiconductor fabrication unit that is in Dholera. Dholera is in Gujarat. Right, this is a semiconductor fabrication unit. Here semiconductor chips will be manufactured. Right, students, moving on. Next is RPF, that is your Railway Protection Force. NDRF is your National Disaster Response Force. IRDM is your Indian Railway Institute of Disaster Management. These three have signed a memorandum of organization, a memorandum of understanding to strengthen the railway disaster response. Right, so what is the main aim here, right? How we can reduce the disasters in the railway sector, right? What are the procedures we need to follow if any disaster occurs? Here drills will be conducted. Here proper protocols need to be followed, right? And planning ahead is the most important thing in that case, because timely prioritizing of the, or basically to prioritize the time in an efficient way, it will save the lives in the early phases of the emergency. Correct. So here these three organizations, they came together, they signed a tripartite MOU because three organizations are there. So tripartite MOU has been signed here that will strengthen the railway disaster response, right? That will help to save the lives in the early phases of the emergency. Apart from this, students, remember Airtel Business secured multi-year contract from IRSOC. IRSOC is your Indian Railway Security Operations Center. This is an AI-based cyber security initiative by the Indian Railways, right? Here data will be fed to the AI and proper meaningful output will be provided and things will be looked into. This move will protect the critical information of the railways, right? Proper infrastructure including systems for ticketing, train tracking, freight operations, signaling, digital payments from cyber threats. All these things will be protected because data is very crucial and we need to conserve the data here, right? Even the money from these cyber threats or these cyber attacks, money can also be lost. So for protecting everything from cyber attacks, this contract has been signed and it is Airtel Business, that is the business to business arm of Bharti Airtel. They have signed this contract from Indian Railways Security Operation Center. Right, students, take a note of it. Then apart from this, remember who has been appointed as the new Director Generals of ITBP and CISF. So for ITBP, Praveen Kumar has been appointed as the new Director General. For CISF, Praveer Ranjan has been appointed as the Director General here. Right, students, take a note of it. The next is, remember who has been appointed as the Chairman of Piramal Finance following
merger, right? So for Piramal Finance, for following the merger, who has been appointed here? Anand Piramal has been appointed as the chairman. Next is students, Indian Coast Guard. They have conducted the 10th edition of Net Polrex. X means 10, right? And the 27th edition of the NOS DCP exercise of the coast of Chennai coast. So two things here, right? So let's take them one by one. First is the national level pollution response exercise, that is the Net Polrex, National Pollution Response Exercise. This was the 10th edition of it that was conducted by Indian Coast Guard, right? And where was it held? It was held in Chennai, Tamil Nadu, of the coast of Chennai, Tamil Nadu. From 5th to 6th of October this was held. More than 105 national delegates and 40 international observers took part in this exercise, and 32 countries took part in this exercise, right? Very important. And here this was in conjunction with the 27th NOS DCP. NOS DCP is your National Oil Spill Disaster Contingency Plan. See, both of them are related. How? In an ocean, if there is a oil spill, then that oil spill will be creating pollution. The marine ecosystem in that particular area will be depleted, right? It will be polluted. So we need to conserve the pollution. Hence, we need to make sure that these oceans, they are pollution free, and if there anytime is there any oil spill disaster, then there should be a proper contingency plan in order to make sure that that oil is not going into the ecosystem and not causing pollution. It should be taken care. Standard operating procedures needs to be have there in that particular oil leak situation, correct? So it is Indian Coast Guard, they have conducted this exercise. Very important. Then apart from this, students, who has been appointed as the BCCI president? So Mithun Manhans has been appointed as the BCCI president, right? Apart from this, remember recently Iron Beam, it is same that of Iron Dome. In this, missiles are used to tackle the incoming missiles. In this, lasers are used in order to tackle the incoming missiles or drones. Both of them are of Israel. Next is Ministry of Panchayati Raj. They have launched a People's Plan Campaign 25-26, that is Sabki Yojana Sabka Vikas Abhiyan, right, across all states and union territories to prepare Panchayat development plans for FY27. The campaign will promote participatory, transparent and accountable local governance by engaging the communities through Gram Sabha meetings, right? So Sabki Yojana Sabka Vikas, launched by which ministry? Ministry of Panchayati Raj. Then apart from this, students, here only remember ICC, they have suspended the USA cricket membership because of the governance failure there, right? Then apart from this, India, we are planning to host Commonwealth Games in 2030 and Olympic Games in 2036. Both of them are expected to be hosted by Ahmedabad, Gujarat. And for this, we have also given a bid that was submitted by PT Usha recently. Next is Union Minister Ashwini Vaishnav has approved the establishing Namo Semiconductor Lab at IIT Bhubaneswar, right? Another semiconductor lab that will be established where? At IIT Bhubaneswar, and it is Union Minister of Electronics and Information Technology Ashwini Vaishnav who has approved the establishment of this Namo Semiconductor Laboratory. The project is funded under the Members of Parliament Local Area Development Scheme with an allocation of 4.95 crore rupees. Right? Take a note of it. The objective here, what this will do is, this will boost the indigenous semiconductor design. It will boost the indigenous manufacturing, right? It will boost the indigenous research and training facilities in the chip technology sector. Correct, students? Take a note of it. Then our country, India, we have won the 7th edition of the SAFF Under 17 Championship, and we defeated Bangladesh by 4-1 in the finals. Then we also won the 9th edition of the Men's Asia Cup, that is related to cricket, and we defeated Pakistan in the finals. Next is DDWS, that is your Department of Drinking Water and Sanitation, that comes under the Ministry of Jal Shakti. They have recently signed a memorandum of agreement with the Bhaskaracharya National Institute for Space Applications and Geo
informatics, right? This is an autonomous scientific society that comes under MEITY, and it is to strengthen digital monitoring of the rural water and sanitation program. See, water is very important resource, and even a lot of population all around the world, they do not get clean drinking water, right, on daily basis. So it is very we can say it is very important in today's world, right? Even today, if we see in rural areas and even in urban areas, there are certain locations where people are not able to get the supply of water on daily basis, correct? So in order to strengthen the rural water and sanitation processes and to make sure it becomes digital, why making it digital is beneficial? Because we will be able to easily record all the data, transparency will be maintained, and people will be accountable because all the data will be right in front of us, right? Based on this, we will be having a lot of data. So based on that, we will be able to make better decisions that will be beneficial for us. Real-time monitoring services will be provided in the rural areas so that the rural water and sanitation services are properly provided to the people there. Next is banking and finance students. So SEBI, they have recently launched validated UPI handles, SEBI check, to strengthen the investor payment security, right? So this is to safeguard the investors against any fraudulent transfers and unauthorized intermediaries, right? This new initiative will bring new layer of trust and transparency, and it has been developed in collaboration with National Payment Corporation of India, correct? So at the rate of valid IDs will be provided here. Green thumbs up symbol will be provided if it is a UPI handle that is valid, correct? So it will be a self verification tool. So SEBI has introduced this at the rate of valid UPI IDs for all the registered investor facing intermediaries, including brokers and mutual funds. Also, SEBI confirmed that the major brokers covering over 90% of the investors along with the mutual funds have already adopted this at the rate of valid UPI handle. Right, students, take a note of it. For SEBI, who is the chairperson? Tuhin Kanta Pandey ji. Correct. Next is Commerce Cooperative Bank. They have launched India's first youth-focused digital app, that is Cosmos Galgal app. Right, this is India's first youth-focused digital banking solution from a cooperative bank. This app will provide integrated video KYC, allowing the users to open zero-balance saving accounts in under 15 minutes from anywhere, eliminating the need to visit a particular branch. Right, this application provides integrated video KYC, right, and here zero-balance saving account can be opened just within 15 minutes. Right, this will promote positive money habits and also will simplify the financial management for the youth in India. Moving on, students, apart from this, when do we observe Antyodaya Divas? Antyodaya Divas. We observe this on 25th of September. Take a note of this. Antyodaya Divas on 25th of September. Next is PhonePe. They, along with Utkarsh Small Finance Bank, have launched Wish credit card. Right, this is a fixed deposit based backed credit card, and the deposit here will be starting from 2000 rupees, available on PhonePe application. What does this mean is, this will be a card, you can do a fixed deposit, and based on that fixed deposit, the limit, say for example, you made a fixed deposit of 1 lakh rupees. So your credit card limit will also become 1 lakh rupees, right? You need to recharge it once you use it, and at the end of the year, you will be getting the fixed deposit returns that are claimed by them. Hence, it is a fixed deposit based backed credit card. Next is Razorpay. Yes Bank, they have launched India's first RBI compliant biometric authentication for the payments. Now what this will do is, this will shift from the traditional two-step authentication system and it will enable the facial recognition, right? This move allow all the online credit cards to be verified using the facial recognition, making a shift from the two-factor authentication models that relied on the PIN and SMS OTPs. Now another layer will be added, that is your facial recognition, and it will enhance a layer of security. Next is President of India Draupadi Murmu ma'am presented My Bharat NSS Award. What is NSS? My Bharat National Service Scheme Awards were presented for the year 22-23. This was during a ceremony that was held at Rashtrapati Bhavan in New Delhi, and a total of 50 recipients, including the NSS unit and program officers, and along with national volunteers, they have received this award. This award was instituted by the Ministry of Youth Affairs and Sports in 93-94. And these awards, they are basically given to recognize the outstanding contribution of the youth in the fields of social services, community development and nation building, right? And here are some of the
winners that you can see. There are many more, just go through them. Moving on, next is John Clark, Michael Deverett, and John Martinis. They have won the Nobel Prize in physics. So these are the three individual scientists, right? They have been awarded the Nobel Prize in physics. Very important, right? This is for the discovery of a microscopic quantum mechanical tunneling and energy quantization in electric circuit in Stockholm, Sweden, right? I repeat, this is for the discovery of microscopic quantum mechanical tunneling and energy quantization in electric circuit in Stockholm, Sweden, right? They demonstrated that the quantum mechanics governs macroscopic systems, right, with Josephson junctions underpinning quantum computers, flash memory, ultra precise quantum computers. Just take a note of it. Last year also it was for quantum entanglement, right? Nobel Prize in physics was given. What is this quantum entanglement? That two particles, if they are quantumly entangled, that means if we take one particle very far away from one each other, say for example one is on sun and one is on earth, then if there is any change in the particle on the sun, then we will be able instantaneously, there will be a change on the particle of the earth if they are quantumly entangled, right? That was a huge discovery that for which Nobel Prize was physics granted last year. And this year for the discovery of the macroscopic quantum mechanical tunneling and energy quantization in electric circuit, the award was granted. Moving on, students, next here you can see the three winners. Next is appointments and resignation. BPF President Hagrama Mohilri sworn in as the CEM of the BTC in Assam. Now what is this BPF? BPF is your Bodoland People's Front. This is a party, right? And Hagrama Mohilre sworn in as the Chief Executive Member and the former Minister of Assam. First of all, remember here that Hagrama Mohilra sworn in as the Chief Executive Member here of the BTC. That is your, what is BTC? Bodoland Territorial Council, right? This is an autonomous body, correct? This was during a ceremony that was held in Assam. Apart from this, remember who has been appointed as the Deputy CEM, that is your Deputy Chief Executive Member here, Rihon Daimri has been appointed as the Deputy CEM for the BPF, that is your Bodoland Party, Bodoland People's Front, right? Next is appointment as acquisitions and mergers. IIHL, that is IndusInd International Holding Limited, the promoter of IndusInd Bank, they have acquired 100% stake in Sterling Bank of Bahamas. So 100% stake has been acquired here, correct? Take a note of this. Earlier 51% stake was acquired in 2022 and now rest 49% stake has been acquired. The new name here will be IIHL Bank and Trust Limited. Next is related to sports. F1 Singaporean Grand Prix was held and George Russell has won it. McLaren secured the 10th constructor title here, right? So George Russell, and he drives for which company? He drives for Mercedes. They have won the 24th edition of the F1 Singaporean Grand Prix, right? This was held at the Marina Bay Street circuit that was in Singapore. And apart from this, it is McLaren company. They have secured enough points to seal the 2025 teams championship with 6 games to spare, right? So who won it? It was won by George Russell. Who secured the George Russell first, Max Verstappen second, and Lando Norris on the third position. Moving on to important days. World Habitat Day observed on 6th of October. This day is observed basically across the world, and specifically it is observed on the first Monday of October. First Monday of October month, right? And it is to highlight the state of human settlements and emphasize every person's right to adequate shelter. Hence World Habitat Day, right? This year it was on 6th of October. There is a theme here, theme being urban crisis response. Urban crisis response is the theme here. Correct, students? Take a note of it. Then next is Maharashtra's Chief Minister Devendra Fadnavis has launched Abhijat Marathi OTT. OTT is your over-the-top platform. This is a platform where more videos, movies, TV series, right, they are presented. And this is a platform, OTT platform, that will be specifically to promote the Marathi language. Hence Abhijat Marathi OTT, launched by Maharashtra's Chief Minister Devendra Fadnavis, correct? And this will be a free OTT service that has been launched.
So that's all for the day, students. Now let's move to the revision part that will be quite beneficial for you all. Mention the agency that signed an MOU with Department of Telecommunication to strengthen the information sharing for tackling cyber crimes and financial frauds in India. It is FIU India, that is Financial Intelligence Unit of India. Next, how much amount was directly transferred to each beneficiary women under Bihar's Mukhyamantri Mahila Rozgar Yojana launched by Prime Minister Narendra Modi on 26th of September? If we look at here, it is 10,000 rupees and it will be transferred to almost 75 lakh women in Bihar. And here further, this is for their growing their entrepreneur or to starting their entrepreneurship journey. If they are doing well, then further add 1 lakh rupees will be further 2 lakh rupees will be transferred if their venture is going good and if they want more funding. Next, what was India's first Maritime Simulation Center inaugurated by Union Minister of Port, Shipping and Waterways Sarbandana Sonowal at a development cost of 13.5 crore rupees. So what was India's first Maritime Simulation Center? What was it? Where it is? It is Academy of Maritime Education and Training in Chennai, Tamil Nadu. Next, mark the correct statement regarding Prime Minister Narendra Modi's visit to Rajasthan on September 25th for the development projects worth 1.22 lakh crore rupees. If we look at the option, all these three options are rightly mentioned. Next, India's first AI-powered Pilgrim Integrated Command Control Center was inaugurated where? It was inaugurated at the Tirumala Temple, Andhra Pradesh, and now you can see AI is being used for crowd control, for promoting safety, for promoting queue efficiency, cyber threat, and many more, right? So this AI-powered Pilgrim Integrated Command Center is at Tirumala Temple, that is in Andhra Pradesh. Next, the Ministry of Statistics and Program Implementation released the 4th edition of Children in India 2025. This was during the 29th Conference of Central and State Statistical Organization in Chandigarh, right? This is also the question, students, that which edition of the COCSSO was held in Chandigarh. It was 29th edition, or vis-a-vis the 29th edition was held where? In Chandigarh. So you have to find out the correct statements here given. If we look at the options here, only C option is rightly mentioned, A is wrong and B is wrong. If we talk about India's infant mortality rate, it has decreased from 44 per 1000 live births to 35 in 2023. Not 35, it is 25 here. Now option A is right. If we look at B, India's under 5 mortality rate was estimated at 20 in 2023 compared to 30 in 2022, right? So it was 29 in 2023 compared to 30 in 2022. Now option B is also right. It is not 20 and C option is already right. Next, which organization released the 8th edition of the Environmental Accounts Report titling Environment Accounting on Forest 2025? This was during the 29th CCSO held in Chandigarh. So which organization released it? It was released by, we just saw, it is your Ministry of Statistics and Program Implementation. Next, pick out the correct statement regarding India's environmental recognition during the 37th session of UNESCO's International Coordinating Council for the Man and Biosphere Program held in Paris, France. So pick out the correct statement here. If we look at the option here, option A is right and option B is right, C is wrongly mentioned. C is saying that during the session, 30 new biosphere reserves were designated globally across 21 countries, the highest number in 20 years. So during the session, how many new biospheres were added? So during this, 26 new biospheres were designated globally across 21 countries, right? That is highest in 20 years. Take a note of this. Next is, okay, one more thing here, students. From India, it is India's cooled desert biosphere reserve that is in Himachal Pradesh that was included to the UNESCO's World Network of Biosphere Reserve. This is important, right? And this is in Himachal Pradesh. Next, mark the correct statement regarding the projects inaugurated by Prime Minister Narendra Modi in Jasorguda in Odisha. So mark the correct statement. If we look at the option here, all these three options are rightly mentioned. Next, which of the following companies, institutions are technology partners for BSNL's Swadeshi 4G network launched by Prime Minister Narendra Modi in September? If we look at the option here, it is your, all of them are right, Tejas Network, Center for Development of Telematics and Tata Consultancy Services. Next,
is in September, the Maintenance Command of the Indian Air Force signed a memorandum of understanding with which institute for collaborative development projects that are aimed at supporting the sustenance and operational requirements of Indian Air Force. If we look at the option, it is IIT Roped, right? So, Maintenance Command of the Indian Air Force, they have signed this MOU with IIT Roped for the collaborative projects that are aimed at supporting the sustenance and operational requirements of the Indian Air Force. Next, which Indian company or which India's defense manufacturing unit was jointly inaugurated by Defense Minister Rajnath Singh and Morocco's Defense Minister Abdelif Ludi in Morocco during September 2025, making this India's first ever defense manufacturing plant in Africa. And it is one of the largest plant there, that is Tata Advanced Systems Limited. Also remember, Tata Advanced Systems Limited, they are launching a plant in Dholera. That is a semiconductor fabrication unit plant. Correct, students? So right option is Tata Advanced Systems Limited, TASL. Next is pick out the incorrect statement regarding the 69th General Conference of the International Atomic Energy Agency held from 15th to 19th of September. If we look at the options here, it is Norway that became the new member state of the IAEA following the approval of the 69th General Conference, bringing the total number of states to 181. Right? Is it so? Is it Norway that we are talking about? So here remember, Maldives became the new member state, not Norway. Maldives became the new member state of International Atomic Energy Agency, and this was the 69th General Conference. Next, identify the company of which RBI has cancelled the certificate of registration due to irregularities in the lending processes. So it is Datta Finance and Trading Private Limited. Because of their irregularities in the lending process, their certification of registration has been cancelled. Next, name the bank that launched industry's first e-rupee person-to-person, that is P2P digital gifting feature on UPI. With this, from 1 to 10,000 rupees, any amount of gift card you can purchase in any number, only it should not exceed 10,000 rupees, right? So it can be any number of cards that you can, these gift cards you can purchase through this e-rupee P2P digital gifting feature, right? Question asked is, which bank has launched this feature? It is Bank of Baroda. They have launched this feature. Next, name the international framework to which RBI renewed their statement of commitment in September to uphold global best practices in foreign exchange market. It is FX Global Code. This code was developed under strategic partnership between the central banks and market participants worldwide and was first published in 2017. Next is mark the revised minimum net worth requirements that SEBI set for custodians in September 25 to strengthen the risk management system. It is 75 crore rupees. It was earlier 50 crore rupees, that was enhanced to 75 crore rupees, that will strengthen the risk management systems. Next, choose the category of traders that RBI permitted in September to participate in rupee non-deliverables derivative contracts in the offshore NDF market. So choose the category of the traders. It is standalone primary dealers, right? And these changes are effective immediately following the RBI's move. Next, RBI, they have released RBI authentication mechanism for digital payment transactions directions for 2025, according to which the directions will apply to all the payment system providers and participants that are banks and non-banks for domestic digital payment transaction. And will these directions, they will be coming into effect from when? They will be coming into effect from 1st of April 2026. Next, pick out the correct statement regarding the revised norms for claim settlement of the deceased customers' bank accounts and lockers by RBI in September 2025. If we look at the options, we have to find the correct statement. So option B is right, C is right, A is wrong. A is saying that all the deposit, it is mandatory for the banks to settle the claims within a time period not exceeding 30 days from the date of receipt. It is not 30 days, but 15 days, right? That means for deposit accounts, it is mandatory for the banks to settle the claims within a time period not exceeding 15 days from the date of the receipt. Next, mention the organization which predicted India's GDP forecast by 40 basis point to 6.7%. Earlier, they were projecting 6.3% and now they are projecting 6.7% for FY26 in their interim report. So, which is that organization? It is OECD, that is Organization for Economic Cooperation and Development.
Next, which company has signed a memorandum of understanding with HD Korea Shipbuilding and Offshore Engineering for long-term strategic collaboration in the shipbuilding sector? It is Cochin Shipyard Limited. Next, identify the company with which L&T, that is Larsen and Toubro, has formed a strategic partnership to support the Advanced Medium Combat Aircraft, that is the 5th generation stealth fighter jet initiative for the Indian Air Force. It is Bharat Electronics Limited, that is BEL. Then mention the aerospace startup that launched India's first large format 3D printing facility for rocket systems at IIT Madras Research Park in Chennai, Tamil Nadu, which is that it is Agnikul Cosmos, right? They have launched this 3D or India's first large format 3D printing facility for rocket systems. Moving on. Next is pick out the correct statement regarding the awards at the 69th edition of the Ballon d'Or award ceremony that took place in Paris, France. If we look at the options, all the options here are rightly mentioned. Important, that is Barcelona and Spain midfielder Aitana Bonmati made history by winning the Women's Ballon d'Or for the 3rd consecutive year. And in the men's category, PSG forward player Ousmane Dembélé has won the Men's Ballon d'Or award and becoming the 6th Frenchman to win this award. Next, choose the celebrity who is not among the top 5 most valued Indian celebrities in the Kroll Celebrity Brand Valuation Report released in September. So among the following, Akshay Kumar is not on the list. Virat Kohli, then Ranveer Singh, Shah Rukh Khan, Alia Bhatt and Sachin Tendulkar. Next, for how long has the tenure of General Anil Chauhan as Chief of Defence Staff and Secretary of the Department of Military Affairs has been extended by the ACC? So his term has been extended by 1 year till 30th of June 2026. Next, in September, the President of India has announced the reappointment of whom as the Attorney General of India. His term has been extended for the 2 years, starting from 1st of October 2025 till 30th of September 2027. So he is R. Venkata Ramaniji, who is the current Attorney General of India. Next, who was appointed as the Deputy Governor of RBI by ACC for a 3-year term starting from 9th of October 2025. So, Shrish Chandra Murmu, right? His term has been extended by 3 years. He has been appointed and his term has been for 3 years. Next, DRDO and Strategic Forces Command conducted a successful test launch of which missile from a rail-based mobile launcher at Abdul Kalam Island, Odisha. So this is a first of its kind initiative where the missile was launched through a rocket launcher that was on a rail system, right? And with this, we have now the capacity that we can launch these missiles right from anywhere where the railway lines are provided. Correct? So this, what is the name of that missile that was tested here? It was Agni Prime missile. Next is NASA. They have collaborated with National Oceanic and Atmospheric Administration, that is NOAA, and they have launched 3 missions such as Interstellar Mapping and Accelerator Program, that is IMAP first. Then second is SWFOL1, that is Space Weather Follow on Lagrange 1 point, and third is your Carothers Geochrona Observatory to study the space weather and their effect on the Earth and space-based technologies. So these are the 3 missions that we are talking about. That is NASA, they have partnered with the National Oceanic and Atmospheric Administration. Next is where did Indian Air Force officially retire their iconic Myokan Guvrich, that is MiG-21 fighter jet in a grand decommissioning ceremony. It was in Chandigarh, and these MiG-21 fighter jets, they will be replaced by whom? This is your homework. Let me know in the comment section that these MiG-21 fighter jets, they will be replaced by which fighter jets. Next, Sudhar System Facility, that is indigenously designed and developed by CSIR's arm Advanced Materials Processes Research Institute of Bhopal, was inaugurated at IMD Delhi. What does R stands for in Sudhar? R here stands for ranging. Next, the 8th level of the Lever Cup was won by Team World by Team Europe. That means Team World has won it by defeating Team Europe in the final. Where was this 8th edition of Lever Cup held? The 8th edition was held in San Francisco, USA. Next, pick out the incorrect statement regarding the Asia Cup held in Dubai International Stadium in UAE. If we look at the options here, we have to find the incorrect statement. B is right, C is right, A is wrong. So our answer is A. A is saying that the Bangladesh has clinched the Asia Cup 2025. No, it is our India. We have won the Asia Cup, right? We defeated Pakistan in the finals here. And this was the 9th time, right? We have won it.
Next, what is the name of the new feature launched by the Employer Provident Fund organization on its member portal in September, allowing subscribers to view a simplified version of their EPF passbook? So, what is the new name of this feature? It is Passbook Lite. Next is who inaugurated the 10th All Indian Conference of Central Administrative Tribunal in September? So, B.R. Gawai ji. Next, identify that organization that has won the 2025 Scotch Award for their digital ticketing system in September 2025. So, it is Andhra Pradesh State Road Transport Corporation. Next, identify that World Health Organization initiative that inducted Singapore's Healthier Eat at the Rate of SG initiative, promoting healthy aging through better housing, transport, healthcare, social participation, and community inclusion. So, it is your global network for age-friendly cities and communities. Next is mention the company that partnered with Nvidia in September to deploy at least 10 gigawatts of AI infrastructure for the next generation AI models. It is OpenAI. CEO of OpenAI is Sam Altman. Next, who led the Indian Olympic Association during the India's formal submission of its 2030 Commonwealth Games hosting proposal in London? So, PT Usha led the Indian Olympic Association here. Take a note of this. Next, the International Cricket Council suspended the membership of whom? It suspended the membership of USA due to repeated governance failures and to establish a functional governance structure. So, ICC suspended the membership of the United States of America Cricket. Next is which country hosted the Asian Cadet Cup, India's first ever international fencing tournament in September? So, it is Uttarakhand that hosted the Asian Cadet Cup. Next, students, is our homework section. First question is Zapad exercise. It was held where? Which edition was it? Held between whom? Then second, fifth edition of the Coast Guard Global Summit. It was held where? Who hosted it? Third question, then name that Indian naval ship that reached Singapore recently for a Pacific Reach exercise. Fourth question, who won the Men's Hockey Asia Cup? And where was this held? Fifth question, tell me first dedicated women's sports channel was launched recently by which country in partnership with AWSN? And sixth question, students, tell me recently when do we observe Grandparents' Day? Seventh, tell me when do we observe National Forest Martyrs' Day? And eighth, when do we observe Hindi Divas? So these are your homework questions, students, and I need to see maximum participation from all the students watching this video. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे 8 अक्टूबर के। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, एंड तक बने रहिएगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वाइल्ड लाइफ वीक की। देन हम बात करेंगे कोलकाता इंडिया की सेफेस्ट सिटी बन गई है, कोलकाता कैपिटल है वेस्ट बंगाल की। देन हम बात करेंगे 1500 करोड़ रुपए का क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग इंसेंटिव स्कीम लॉन्च किया गया अभी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा। देन हम बात करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन लैंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, जो कि गांधीनगर गुजरात में देखने को मिली। इन सभी चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड मेनी मोर, सो स्टे ट्यून विद अस टिल द एंड। वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज विकास राणा। We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code VIKAS10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. स्टार्ट करते हैं नेशनल अफेयर से। यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी, इन्होंने प्रिजाइड किया वाइल्ड लाइफ वीक 2025 सेलिब्रेशन को, एंड कुछ की इनिशिएटिव्स यहाँ पे लॉन्च किए गए। देखो, सबसे पहले वाइल्ड लाइफ वीक कब से कब ऑब्जर्व किया जाता है? ये 2 से लेके 8 अक्टूबर तक ऑब्जर्व किया गया। ये 71st एडिशन है वाइल्ड लाइफ वीक का। इसका जो इवेंट था हरी सिंह ऑडिटोरियम में हुआ, जो कि इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट अकेडमी में है, जो कहाँ पर है? फॉरेन रिसर्च इंस्टीट्यूट कैंपस में, जो देहरादून उत्तराखंड में है। राइट, ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन पहले कई बार आ चुका है कि फॉरेन रिसर्च इंस्टीट्यूट कैंपस कहाँ पर है? देहरादून उत्तराखंड में है। एंड 2 से 8 अक्टूबर तक हमने ये 71st एडिशन ऑफ नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक ऑब्जर्व किया, जिसकी थीम है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ को एग्जिस्टेंस, मतलब ह्यूमंस एंड वाइल्ड लाइफ
टुगेदर एक को एग्जिस्टेंस कर सके, साथ साथ रह चुके सस्टेनेबली। यहीं पे हम देखें इस इवेंट के दौरान 5 की इनिशिएटिव्स लॉन्च किए, 5 नेशनल प्रोजेक्ट्स फॉर स्पीशीज कंजर्वेशन लॉन्च किए गए, ये वो प्रोजेक्ट्स हैं। देन इसके बाद कुछ यहाँ पर 4 नेशनल लेवल एक्शन प्लान लॉन्च किए गए स्पीशीज एस्टिमेशन के लिए। एसएफएस ऑफिसर्स मैस को लॉन्च किया गया एट कोयम्बटूर तमिलनाडु एंड नेशनल हैकेथॉन ऑन एचडब्ल्यूसी को एग्जिस्टेंस का कंक्लूजन हुआ। हैकेथॉन क्या होता है? जब एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी जाती है एंड टीम्स उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के सॉल्यूशंस फाइंड करती है एंड जो बेस्ट सॉल्यूशन होता है उस टीम को यहाँ पे फंड भी किया जाता है, उनको ग्रो करने में मदद की जाती है, उनकी मार्केटिंग की जाती है, उनको मेंटरशिप प्रोवाइड किया जाता है, एक तरीके से पूरा इंक्यूबेशन उनके लिए प्रोवाइड करा जाता है। ठीक है, तो मार्क करके चलेंगे 5 की प्रोजेक्ट्स। देन वाइल्ड लाइफ की थीम 71st नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक कब से कब तक कहां पर हुआ एंड भूपेंद्र यादव जी के द्वारा इसको प्रिसाइड किया गया। ठीक है, फिर यहीं पे याद रखेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी इनॉग्रेट किया कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को कहां पर? कोलकाता में। ठीक है, 5th फुल्ली लिटरेट स्टेट कौन सी बन गई है? वो है हिमाचल प्रदेश। देन यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस कौन होस्ट कर रहा है? दुबई होस्ट कर रहा है। कौन सा एडिशन है ये यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का? 28th एडिशन है। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स फिर एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिसर्च ब्यूरो। आई रिपीट एनसीआरबी आई मीन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। इनके द्वारा क्राइम्स इन इंडिया 2023 अभी एक रिपोर्ट रिलीज किया गया, राइट। एंड ये रिपोर्ट बताता है कि कोलकाता जो कि वेस्ट बंगाल में है ये इंडिया की सेफेस्ट सिटी है, सेफेस्ट सिटी, राइट। 2023 का ये डाटा है एंड इट इज फॉर द 4th टाइम जो ये सेफेस्ट सिटी सामने निकल के आई है। 83.9 इसके पॉइंट्स रहेंगे यहाँ पे। अगर मैं बात करूं अनसेफ सिटी की, मोस्ट अनसेफ सिटी इन इंडिया कौन सी है? वो है कोची। कोची कहां पर है? केरला। कोची के बाद आ जाता है दिल्ली का 2nd पोजीशन पे, राइट। तो आप देख सकते हैं कोची, ये लिस्ट है ऑफ अनसेफ सिटीज इन इंडिया। कोची, केरला, देन दिल्ली, देन सूरत, देन जयपुर, देन पटना। और सेफेस्ट सिटी में कोलकाता ने यहाँ पे टॉप किया। 4th कॉन्जिक्यूटिव टाइम यहाँ पे कोलकाता ने टॉप किया है। ठीक है, फिर इसी के बाद हमारी कंट्री ने, इंडिया ने अभी लॉन्च किया वर्ल्ड का पहला डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी को, जिसका नाम रहेगा आदि संस्कृति। ठीक है, मार्क करेंगे। फिर इसी के द्वारा अनुप्रिया पटेल, राइट, इन्होंने इनॉग्रेट किया नेशनल VRDL कॉन्क्लेव को न्यू दिल्ली में। ज्ञान भरतम ये कॉन्फ्रेंस हुई न्यू दिल्ली में हुई, जहीं पे ज्ञान सेतु पोर्टल भी लॉन्च किया गया। किन के द्वारा? PM मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा अभी एक 1500 करोड़ रुपए का एक इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की गई है। ये स्कीम बेसिकली किस लिए है? क्रिटिकल मिनरल्स की रिसाइकलिंग के लिए। देखो क्रिटिकल मिनरल्स हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत सारी टेक्नोलॉजीज में, इक्विपमेंट्स में इनको यूज़ होता है। तो उन इक्विपमेंट्स को हम अगर रिसाइकल कर सकें एंड इन क्रिटिकल मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकें तो ये काफ़ी बड़ा एक इंडस्ट्री बन सकती है, एक प्रॉपर सेक्टर हो सकता है। तो इसी के लिए यहाँ पे 1500 करोड़ रुपए की ये इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की गई है, जो कि अट्रैक्ट करेगी वेरियस इंडस्ट्री लीडर्स को, मैन्युफैक्चरर्स को, बिजनेसमैन को, एंटरप्रेन्योर्स को, कि वो इस सेक्टर को एक तरीके से अपना सकें, राइट। एंड ये जो स्कीम है कब से कब तक वैलिड है, एक ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो 2 अक्टूबर से लेके 1 अप्रैल 2026 तक ये वैलिड रहेगी। ठीक है, मार्क करेंगे। ये स्कीम का ड्यूरेशन बेसिकली फिर क्या है, मतलब ये क्या डेट है, नॉट स्कीम वैलिड रहेगी, यहाँ पे एप्लीकेशंस एक्सेप्ट की जा रही हैं इस ड्यूरेशन के दौरान। एंड ये स्कीम 6 साल तक वैलिड रहेगी, मतलब FY 2031 तक ये स्कीम वैलिड रहेगी, FY 26 से लेके, राइट। किसके द्वारा लॉन्च की गई है? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया। फिर इसी के बाद INS अरावली, इसको कमीशन किया गया कहाँ पर? ये कहाँ पर है? गुरुग्राम हरियाणा में। अरावली पहाड़ियाँ हैं गुरुग्राम हरियाणा में। यहीं पे आप देखेंगे गुड़गांव में, अगर आपको याद हो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आए थे द्वारका एक्सप्रेसवे पे, यहीं पे SPR आ जाता है। यहीं पर आपकी लेपर्ड ट्रेल है, जहाँ पर आपका एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने की बात की जा रही है गुरुग्राम के द्वारा, राइट। सो दिस इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग थिंग। और एक पेड़ माँ के नाम इनिशिएटिव भी यहीं पे इन अरावली की पहाड़ियों पे ही मनोहर लाल खट्टर जी ने लॉन्च किया था अलॉन्ग विद द चीफ मिनिस्टर।
नेक्स्ट है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन लैंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। ये भी कहाँ पर हुआ? गांधीनगर गुजरात में। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए प्रॉपर तरीके से हमें कैसे रेडी रहना चाहिए, क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं अगर कल को डिजास्टर आता है तो, एंड इमरजेंसी के टाइम पे हम पहले से प्रिपेयर रह सकें ताकि लोगों की जानें बचाई जा सकें। ये कॉन्फ्रेंस हुआ था। कहाँ पर हुआ था? महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर में, जो कि गांधीनगर गुजरात में है। एंड ये यहाँ पे चीफ गेस्ट थे भूपेंद्र पटेल, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं गुजरात के। राइट, टेक अ नोट ऑफ दिस। फिर यहीं पे आरओ डेयरी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई। ये आरओ डेयरी मोबाइल एप्लीकेशन का काम क्या रहेगा? ये डेली वर्क लॉग्स को यहाँ पे डिजिटाइज करेगी, इंस्पेक्शन को, रेवेन्यू ऑफिसर्स को रियल टाइम मॉनिटरिंग में हेल्प करेगी। देन आईएलए सिस्टम आ जाता है, इंटीग्रेटेड लैंड एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पर जो एक प्लेटफॉर्म रहेगा जहाँ पे रजिस्ट्रेशन ईजिली हो सकेगा, सर्वे ईजिली हो सकेगा जीआईएस मैपिंग के लिए, एंड रेवेन्यू कोड मैनेजमेंट के लिए नो सिंगल सर्वे। फिर स्वामिता कार्ड्स यहाँ पे लॉन्च किए गए। स्वामिता की फुल फॉर्म जरूर याद रखना, सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन द विलेज एरियाज प्रॉपर्टी। ठीक है, मार्क करेंगे। एंड फिर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया वहाँ की एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के साथ, ताकि एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी वहाँ पे इस्टेब्लिश करा जा सके। राइट स्टूडेंट्स, फिर इसी के अलावा फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस, ये न्यू दिल्ली में हुई, प्रहलाद जोशी के द्वारा इसको इनॉग्रेट करा गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, 3 ऑर्गेनाइजेशन याद रखेंगे, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, एंड आईआरडीएम। आईआरडीएम है इंडियन रेलवेज इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। तो इन तीनों के द्वारा अभी एक ट्राईपार्टाइट एमओयू साइन किया गया, एंड ये स्ट्रेंथन करेगा रेलवे डिजास्टर रिस्पांस को, कि इंडिया में जो रेलवे डिजास्टर होते हैं हम उनके लिए पहले से प्रिपेयर रह सकें, वहाँ पे क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं उनको किया जा सके, पहले से हम ड्रिल्स कर सकें कि पहले से हम प्रिपेयर रह सकें कि किस सिचुएशन में कैसे क्या करना है, प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है। एंड जब इमरजेंसी होती है उस टाइम पे टाइमली रिस्पॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टाइमली हम रिस्पॉन्स करेंगे, टाइमली प्रोसीजर्स, प्रॉपर प्रोसीजर्स गाइडलाइंस फॉलो करेंगे तो टाइमली हम बहुत सारी लाइफ भी सेव कर सकते हैं ऐसे टाइम पर। करेक्ट, तो इसीलिए ये एक ट्राईपार्टाइट एमओयू हमने देखा। फिर इसी के अलावा याद रखेंगे एयरटेल बिजनेस, ये एक B2B बिजनेस टू बिजनेस आर्म है भारतीय एयरटेल का, जिन्होंने एक मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर करा है IRSOC से, जो कि है इंडियन रेलवे सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर। ये AI बेस्ड साइबर सिक्योरिटी इनिशिएटिव है इंडियन रेलवेज का, जो कि साइबर थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए, कि जो ट्रेन ट्रैकिंग, फ्लाइट ऑपरेशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट, टिकटिंग सिस्टम्स, डिजिटल पेमेंट, सिग्नलिंग, इन सब से साइबर थ्रेट को बचाया जा सके, एंड जो प्रॉपर स्मूथ रनिंग होती है किसी भी सिस्टम की उसके ऊपर काम किया जा सके विदाउट एनी इंटरफेरेंस। राइट, तो प्रॉपर एक IT इंफ्रास्ट्रक्चर को प्ले आउट करने के लिए यहाँ पर ये एक मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया। करेक्ट स्टूडेंट्स, फिर इसी के अलावा इंडिया का पहला बैम्बू बेस्ड एथेनॉल प्लांट लॉन्च किया गया। कहां पर? असम में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, फिर इंडियन कोस्ट गार्ड हमने होस्ट किया। इंडियन कोस्ट गार्ड ने 10th एडिशन ऑफ द नेशनल पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज, आई रिपीट, नेशनल पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज को ये 10th सजेस्ट करता है कि ये 10वां एडिशन है। राइट, एंड ये था ड्यूरिंग द 27th NOSDCP, जो कि है नेशनल ऑयल स्पिल डिजास्टर कंटेंजेंसी प्लान एक्सरसाइज के द्वारा। ये कहां पर हुई? चेन्नई, तमिलनाडु में, ऑफ द कोस्ट ऑफ चेन्नई। देखो यहाँ पे 105 नेशनल डेडिकेट्स, 40 इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स, 32 नेशंस का पार्टिसिपेशन देखने को मिला ड्यूरिंग दिस 27th एडिशन ऑफ दिस नेशनल ऑयल स्पिल डिजास्टर कंटेंजेंसी प्लान की जो ये एक्सरसाइज 10th लेवल नेशनल पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज हुई। देखो दोनों आप देख सकते हैं, पॉल्यूशन के ऊपर काम कर रहे हैं एंड ऑयल स्पिल के ऊपर। तो अगर मान लो किसी एरिया में ओशन में ऑयल स्पिल होता है तो वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट कर सकता है नियर बाय एरियाज में। राइट, वहाँ से जो मरीन बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है, एक प्रॉपर इकोसिस्टम खराब होता हुआ दिखता है, मरता हुआ दिखता है। तो इस पॉल्यूशन को रोकने के लिए एंड टाइमली हम एक्शन ले सकें, इसीलिए ये एक्सरसाइज कराई गई कि हम पहले से प्रिपेयर रह सकें। करेक्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आ जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। इन्होंने लॉन्च किया PPC क्या है? यह है पीपल्स प्लान कैंपेन 2025-26 का, सबकी योजना सबका विकास। ये क्या है कि सबका एक एवरीवंस प्लान, एवरीवंस डेवलपमेंट। राइट, ये लॉन्च किया गया ताकि पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स को प्रिपेयर किया जा सके फॉर FY27, जिससे जो है ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होगी, पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, लोकल गवर्नेंस की अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, जिससे क्या होगा, ग्राम सभा मीटिंग्स उनकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, उनकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, एंड जो लोकल एरियाज में डेवलपमेंट है वो फ्लरिश होता हुआ हमें दिखेगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा ये सबकी योजना सबका विकास अभियान यहाँ पे लॉन्च किया गया। मार्क करेंगे, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। राइट, फिर इसी के अलावा स्टूडेंट्स याद रखना, अभी रिसेंटली एक
या फिर हम बोले 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन अपॉइंट किए गए? सीपी राधाकृष्णन, राइट। फिर इसी के अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि किनको अभी इंडियन ओवरसीज बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया गया है? अजय कुमार श्रीवास्तव, एंड इनका टर्म 21 महीने से एक्सटेंड कर दिया गया, करेक्ट। फिर इसी के अलावा स्टूडेंट्स नेक्स्ट पे आते हैं, यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी, इन्होंने अप्रूव किया एस्टेब्लिशिंग ऑफ नमो सेमीकंडक्टर लैब एट आईआईटी भुवनेश्वर। यहाँ पे नमो सेमीकंडक्टर लैब है तो बेसिकली याद रखेंगे यहीं पे चिप्स को बनाया जाएगा, इंडिजीनियसली बनाया जाएगा, उनको इंडिजीनियसली मैन्युफैक्चर किया जाएगा, पैकेजिंग उनकी यहाँ पर होगी, तो इससे क्या है ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी एंड इंडिजीनियसली काम होगा, सब इंडिया में ही होगा, तो जॉब्स यहाँ पर बढ़ती हुई दिखेंगी। 4.95 करोड़ रुपए यहाँ पे अलोकेट किए गए अंडर द MPLAD स्कीम एंड आईआईटी भुवनेश्वर में ये सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी स्टैब्लिश की जा रही है। एक और चीज याद रखेंगे, टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड यहाँ पे एक सेमीकंडक्टर की फैब्रिकेशन यूनिट प्लांट बना रहा है, ये मैन्युफैक्चरिंग होगी यहाँ पर आपकी सेमीकंडक्टर्स की, राइट। कहां पर? धौलेरा में। धौलेरा कहां पर है? गुजरात में। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है DDWS जो कि है डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। इन्होंने अभी एक मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट साइन किया विद बाइसेच एंड BISAG। BISAG क्या है? भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स के साथ, राइट। ये किस लिए किया गया है? ताकि रूरल एरियाज में जो सैनिटेशन है एंड रूरल एरियाज में जो वाटर है उनके ऊपर काम किया जा सके, लोगों तक प्रॉपर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर पहुंच सके एंड वाटर सप्लाई में कोई कमी ना आ सके इन दोज रूरल एरियाज, ये यहाँ पे लॉन्च किया गया। देखो वाटर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इवन आज के टाइम पे हम देखते हैं पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको डेली बेसिस पे क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलता। इवन इंडिया में, इवन इन अर्बन एरियाज बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे प्रॉपर सप्लाई का पानी आता है, लेकिन पॉपुलेशन इतनी है तो हर लोगों तक प्रॉपर वो सप्लाई का पानी नहीं पहुंच पाता, जिसके लिए यहाँ पे ये इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए हैं ताकि लोगों तक प्रॉपर सप्लाई का पानी हो सके एंड जो अनट्रीटेड वाटर है, जो सैनिटेशन वाटर है, उसको हम प्रॉपर तरीके से ट्रीट कर सके। देन इसके बाद याद रखेंगे, इसरो ने अभी रिसेंटली स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की टेक्नोलॉजी TOT करा। TOT होता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, राइट। ये अग्रीमेंट हुआ, ये 100th अग्रीमेंट था ऑफ इसरो, किसके साथ हुआ? ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को ये स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की टेक्नोलॉजी मिली है। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर बैंकिंग एंड फाइनेंस पे स्टूडेंट्स। सेबी ने लॉन्च किया वैलिडेटेड UPI हैंडल्स को। सेबी चेक रहेगा, जिससे क्या होगा? इन्वेस्टर पेमेंट सिक्योरिटी बढ़ती हुई हमें यहाँ पे दिखेगी। एट द रेट ऑफ वैलिड, ये बेसिकली यहाँ पे हैंडल लॉन्च किए गए हैं, जिससे जो आप जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक पेमेंट करनी है, एक मर्चेंट A है, उसको B तक पेमेंट देनी है एंड बीच में मान लो कोई थर्ड पार्टी आ जाती है, तो उस पार्टी को यहाँ पे वैलिडेट करने के लिए, फॉर एग्जांपल इसको आप म्यूचुअल फंड्स के तरीके से समझिए। आप ग्रो म्यूचुअल फंड यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है यहीं पे, तो आपने पैसा इनको भेजा एंड फर्दर ये पैसा आपके स्टॉक्स में लगाते हैं, तो ये जो ग्रो प्लेटफॉर्म यूज करेंगे ना, ये म्यूचुअल फंड का प्लेटफॉर्म इक्विटी हैंडल, राइट, जो ये ब्रोकर्स यूज करेंगे, उसको वैलिडेट करने के लिए, उसको सिक्योर बनाने के लिए एंड लोगों के साथ कोई फेक चीज ना हो जाए, कोई स्कैम ना हो जाए, उसको रोकने के लिए सेबी के द्वारा ये एट द रेट ऑफ वैलिड UPI IDs को लॉन्च किया गया फॉर रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स फेसिंग इंटरमीडिएटरीज इंक्लूडिंग ब्रोकर्स एंड म्यूचुअल फंड्स। नेक्स्ट, कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, इन्होंने इंडिया का पहला यूथ फोकस्ड डिजिटल ऐप कॉस्मोस गलगल ऐप को लॉन्च किया गया। ये बेसिकली इंडिया की पहली यूथ फोकस्ड डिजिटल बैंकिंग सॉल्यूशन रहेगा फ्रॉम अ कोऑपरेटिव बैंक। यहाँ पे KYC वीडियो KYC प्रोवाइड की जाएगी, जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट खोला जाएगा 15 मिनट के अंदर ही। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स फिर फोन पे, इन्होंने भी उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ मिलकर विश क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया, जो कि एक फिक्स डिपॉजिट बेस्ड क्रेडिट कार्ड है। बेसिकली ये क्या होता है फिक्स डिपॉजिट बेस्ड क्रेडिट कार्ड? मान लो आपने 1 लाख रुपए की FD कराई, इस पे आपको 7% का इंटरेस्ट मिल रहा है, राइट। लेकिन ये क्या करते हैं क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू, जो फिक्स डिपॉजिट बेस्ड क्रेडिट कार्ड होते हैं, इसी को आपकी क्रेडिट लिमिट बना देते हैं, राइट, कि आपकी फिक्स डिपॉजिट तो है ही, लेकिन आपका एक क्रेडिट कार्ड भी बन गया जिसकी 1 लाख रुपए की लिमिट रहेगी एंड जैसे ही आप इसको यूज करेंगे आपको वापस से इसको फिल कराना पड़ेगा, वरना कुछ % आपको चार्ज देना पड़ेगा। आप अगर इसकी FD बढ़ा देते हैं तो आपकी क्रेडिट लिमिट भी बढ़ती हुई दिखेगी। तो ये फैसिलिटी यहाँ पे लॉन्च की गई है फोन पे ने अलॉन्ग विद उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड विश क्रेडिट कार्ड को यहाँ पे लॉन्च किया। मूविंग ऑन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आ जाते हैं रेजर पे। येस बैंक, इन्होंने लॉन्च किया इंडिया का पहला RBI कंप्लायंट बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन को फॉर पेमेंट्स। पहले क्या होता था, आपका पिन नंबर डलता था, फिर आपका OTP आता था फोन पे, ये 2 प्रोसेस होती थी, ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता था। अब एक थर्ड लेयर ऐड कर दी गई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फेशियल रिकॉग्निशन,
राइट मतलब अब आपका फेशियल रिकॉग्निशन होगा, जिससे जो सिक्योरिटी है वो बढ़ जाएगी, जिससे क्या है पेमेंट्स में डिफॉल्ट होने का खतरा नहीं रहेगा, या फिर रॉन्ग जगह पे पेमेंट जाने का खतरा नहीं रहेगा, या कोई आपका अकाउंट हैक कर कर आपकी पेमेंट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इन दी एंड उनको आपका फेशियल रिकॉग्निशन करना होगा इन ऑर्डर टू मेक द पेमेंट। तो ये काफी अच्छी एक न्यूज है, जिससे पेमेंट स्ट्रक्चर हमारा और सिक्योर होता हुआ दिखेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम, इन्होंने प्रेजेंट किया माय भारत एनएसएस अवार्ड्स को। एनएसएस क्या है? नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड्स को 22-23 के लिए लॉन्च किए गए, राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली में ये लॉन्च किए गए, एंड 50 रेसिपिएंट्स इंक्लूडिंग एनएसएस यूनिट्स, एनएसएस वॉलंटियर्स, राइट, इनको यहाँ पे दिया गया। मल्टीपल यहाँ पे आप देख सकते हैं अवार्डीज रहेंगे। ये बेसिकली आप ऐसे समझिए, सबसे पहले ये अवार्ड दिया किसके द्वारा जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा। एंड ये अवार्ड का मेन एम क्या है? जो कंट्रीब्यूशन दिया है यूथ ने इन सोशल सर्विसेज, कम्युनिटी डेवलपमेंट, नेशन बिल्डिंग, उनको ऑनर करने के लिए ये भारत एनएसएस अवार्ड से सम्मानित करा गया है। मूविंग ऑन स्टूडेंट्स, फिर आ जाते हैं नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। किन किन को मिला? जॉन क्लार्क, माइकल डेवरेट एंड जॉन मार्टिनीज, इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया है नोबेल प्राइज इन फिजिक्स के साथ। राइट, किस लिए? इन्होंने अभी डिस्कवर किया मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग एंड एनर्जी क्वांटाइजेशन इन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये स्टॉकहोम स्वीडन में इनको सम्मानित किया गया। अगर आपको याद हो लास्ट ईयर का जो नोबेल प्राइज था इन फिजिक्स, वो किस लिए दिया गया था? वो था क्वांटम एंटेंगलमेंट के लिए। क्वांटम एंटेंगलमेंट क्या होता है? दो पार्टिकल्स अगर एंटेंगल्ड हैं एंड इनको कितनी ही डिस्टेंस पे रख दो और एक में अगर चेंज होगा तो दूसरे में ऑटोमेटिकली चेंज होगा एट द राइट मोमेंट। मतलब एक पार्टिकल सन पे, एक अर्थ पे है, तो सन पे अगर कुछ भी चेंज होता है उस पार्टिकल में, वी विल बी एबल टू डिटेक्ट इजिली दूसरे पार्टिकल जो अर्थ पे है। राइट, इंस्टेंट चेंज होता है, स्पीड की लाइट भी इतनी फास्ट नहीं होगी जितना यहाँ पे ये चेंज हमें देखने को मिलता है अगर ये क्वांटम एंटेंगल पार्टिकल है। राइट, तो ये डिस्कवरी के लिए लास्ट ईयर क्वांटम एंटेंगलमेंट के लिए नोबेल प्राइज मिला था। इसलिए इस साल मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग के लिए एंड एनर्जी क्वांटाइजेशन के लिए इलेक्ट्रिक सर्किट में ये अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आप यहाँ पे ये 3 विनर्स देख सकते हैं। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन। बीपीएफ के प्रेसिडेंट हग्रामा मोहिलरी, इनको यहाँ पे अभी स्वॉर्न किया गया एज द सीईएम। सीईएम होते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर। बीपीएफ है बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट, बोडोलैंड बेसिकली एक ट्राइब है। राइट, उनके प्रेसिडेंट यहाँ पे अपॉइंट किए गए हग्रामा मोहिलरी, ये स्वॉर्न इन किए गए एज द चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ द बीटीसी। बीटीसी क्या है? बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के। असम में ये अपॉइंट किए गए। यहीं पे अगर मैं पूछूं डेप्यूटी सीईएम कौन अपॉइंट किए गए हैं, तो डेप्यूटी सीईएम कौन अपॉइंट किए गए हैं? वो है रिहोन डायमरी। ठीक है, मार्क करेंगे ये दोनों अपॉइंटमेंट्स। इसके बाद आ जाते हैं एक्विजिशंस एंड मर्जर्स पे। अभी आईआईएचएल इन्होंने 100% स्टेक एक्वायर कर लिया स्टर्लिंग बैंक में ऑफ बहामास। पहले इनके पास 51% स्टेक था जो कि 2022 में एक्वायर हुआ था, और रेस्ट 49 स्टेक अब 2025 में इनके द्वारा एक्वायर कर लिया गया है। एंड अब जो न्यू नेम आएगा आईआईएचएल बैंक एंड ट्रस्ट लिमिटेड का ये नाम रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स फिर स्पोर्ट्स के ऊपर। अभी F1 सिंगापुरियन ग्रैंड प्रिक्स हमें देखने को मिली थी, ये 24th एडिशन था इसका। राइट, किसके द्वारा जीती गई? जॉर्ज रसल के द्वारा जीती गई, जो कि मर्सिडीज के लिए ड्राइव करते हैं। मैक्लेरन ने यहाँ पे 10th कंस्ट्रक्टर टाइटल को जीत लिया है। इनके इनफ पॉइंट्स हैं इन द पॉइंट्स टेबल, जो कि अभी ये मैक्लेरन ब्रांड टॉप पोजीशन पर है। राइट, और अगर पूछा जाए ये सिंगापुरियन ग्रैंड प्रिक्स किसके द्वारा जीती गई? जॉर्ज रसल के द्वारा, जो कि मर्सिडीज के लिए ड्राइव करते हैं। तो जॉर्ज रसल फर्स्ट पर थे, मैक्स वर्स्टैपन सेकंड पे थे, लैंडो नॉरिस थर्ड पोजीशन पे थे। मूविंग ऑन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आ जाते हैं फिर इंपॉर्टेंट डेज पे। वर्ल्ड हैबिटेट डे 6 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। जनरली ये डे ऑब्जर्व किया जाता है ऑन द फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर मंथ। राइट, ये हाईलाइट करता है द स्टेट ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट एंड एम्फेसाइज एवरी पर्सन्स राइट टू एडिक्वेट शेल्टर। सबके पास शेल्टर होना चाहिए। इस साल हमने ये जे 6 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया। इसकी एक थीम याद रखेंगे, अर्बन क्राइसिस रिस्पॉन्स। फिर आ जाते हैं स्टेट न्यूज़ के ऊपर। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस के द्वारा लॉन्च किया गया अभिजात मराठी ओटीटी। ओटीटी क्या है? ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म। यहाँ पर आप टीवी शोज, मूवीज देख सकते हैं मराठी लैंग्वेज में स्पेसिफिकली, इसीलिए ये लॉन्च किया गया है। एंड ये फ्री ओटीटी रहेगा, मतलब इसका कोई चार्ज नहीं रहेगा। तो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी के द्वारा ये अभिजात मराठी ओटीटी प्लेटफॉर्म को लॉन्च करा गया। इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, मार्क करेंगे, जिससे क्या है इनका कल्चर, इनकी रीजनल लैंग्वेज यहाँ पे प्रमोट होती हुई दिखेगी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पे, जिससे आपकी लर्निंग और स्ट्रांग होगी।
ऑन 23 सितंबर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन्होंने मार्क किया 7th एनिवर्सरी ऑफ आयुष्मान भारत योजना, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट हेल्थ एश्योरेंस स्कीम रहेगी। तो ये आयुष्मान भारत योजना किसके अंडर ऑपरेट करती है? ये ऑपरेट करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, राइट। एंड इसको पहले हम एक नाम से जानते थे जो कि नेशनल हेल्थ पेंशन प्रोटेक्शन स्कीम, राइट। एंड इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 23 सितंबर, आयुष्मान भारत को लॉन्च किया गया था 23 सितंबर 2018 में रांची, झारखंड में। मूविंग ऑन, नेक्स्ट, in September, which Indian institute became a new partner of the Goldman Sachs 10,000 Women program alongside IIM Lucknow incubation center to support the women entrepreneurs। तो 10,000 women entrepreneurs तक का टारगेट रहेगा कि यहाँ पे इन 10,000 women entrepreneurs को सपोर्ट करना है एंड उनकी एंटरप्रेन्योर जर्नी में उनको हेल्प करना है टू ग्रो। तो पूछा जा रहा है किस इंडियन इंस्टीट्यूट बिकेम द न्यू पार्टनर ऑफ द गोल्डमैन सैक्स है? तो कौन सा IIM है? वो है IIM अहमदाबाद। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द DSIR CSIR स्कीम ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट प्रोग्राम अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो यहां पर अगर हम देखें तो आपके तीनों ऑप्शन बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज द टोटल कैपिटल कॉस्ट अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द 4-लेन साहिबगंज अरेज बतिया सेक्शन, जो कि NH 139 वाटरवे पे रहेगा इन बिहार अंडर हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। तो टोटल कॉस्ट कितना अप्रूव किया गया है? 3,822.31 करोड़ रुपीज अप्रूव किया गया। देखो स्टूडेंट्स, क्या है कि अब यहाँ पे आपसे डायरेक्ट न्यूज नहीं पूछी, आपसे सिर्फ कॉस्ट पूछ ली। तो कॉस्ट भी जो मैं आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियो में सुबह अपलोड करता हूँ, जो मैं आपको बताता हूँ कॉस्ट भी कहीं जगह पर, तो वो कॉस्ट भी नोट करके चला करो, क्योंकि उससे क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द अप्रूवल्स ऑफ यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 24 सितंबर। तो यहां पर अगर हम देखें तो ऑप्शन ए सही है, सी सही है, बी गलत है, राइट। यहां पे यही याद रखेंगे कि अभी क्या है, यूनियन कैबिनेट के द्वारा जो अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट की जो स्कीम सीट्स होती हैं स्टूडेंट्स की मेडिकल सेक्टर में, वो बढ़ाई गई हैं। नेक्स्ट, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 11th एनिवर्सरी ऑफ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। तो यहां पे आपको बताना है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंडर कौन सा सही रहेगा। एक और चीज स्टूडेंट्स, ए से, हाँ बिल्कुल सही है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंडर। तो यहां पर अगर हम देखें तो आपका ऑप्शन ए गलत है, बी सही है, सी सही है। ये बी गलत क्यों है? ये इनिशिएटिव डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के द्वारा नहीं लॉन्च किया गया था, DPIIT के द्वारा लॉन्च किया गया था 24 सितंबर 2014 को। नेक्स्ट, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 4 पिलर स्ट्रेटेजी अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो कि इंडिया की शिप बिल्डिंग एंड मैरीटाइम सेक्टर को रेवोल्यूशनाइज करने का काम करेगा। तो ये तो 3 पिलर्स बिल्कुल सही हैं। एक यहीं पे याद रखेंगे, पिलर 4। ये पिलर 4 किस चीज का है? तो पिलर 4 आ जाता है स्किलिंग एंड टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज के ऊपर। स्किलिंग एंड टेक्निकल कैपेबिलिटीज, लीगल, टैक्सेशन, पॉलिसी रिफॉर्म्स के ऊपर, ठीक है। ये आपका पिलर 4 रहेगा और बाकी 3 पिलर हम देख ही चुके हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द कंपनी जिन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ अभी एक 62,370 करोड़ रुपीस की डील साइन की फॉर प्रोक्योरिंग ऑफ 97 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स फॉर द इंडियन एयरफोर्स। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रहेगी, कौन सी कंपनी है? वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं, मेंशन द एजेंसी जिन्होंने साइन किया एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन टू स्ट्रेंथन इंडियाज इंफॉर्मेशन शेयरिंग फॉर टैकलिंग साइबर क्राइम्स एंड फाइनेंशियल फ्रॉड्स इन इंडिया। तो किनके द्वारा ये MOU साइन किया गया? फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया के द्वारा ये MOU साइन किया गया। फिर आ जाते हैं, कितना अमाउंट को डायरेक्टली ट्रांसफर किया गया टू ईच बेनिफिशियरी? 75 लाख वीमेंस को, जो कि बिहार में रहेंगी अंडर मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया। तो कितना अमाउंट डायरेक्टली ट्रांसफर किया गया? वो है 10,000 रुपीज। ये फर्स्ट फेज में रहेगा, इनके स्टार्टअप्स को ग्रो करने के लिए इन वीमेंस के हर फैमिली से एक वीमेन को ये अमाउंट मिलेगा। फर्दर सेकंड फेज में अगर उनका स्टार्टअप अच्छा काम कर रहा है, राइट, वो अच्छे से बिल्ड हो चुका है, तब वहां पर 2 लाख रुपए फर्दर उनको देने का काम किया जाएगा। Next, where was India's first maritime simulation center inaugurated by the Ministry of Port, Shipping and Waterways, Sarbandana Sonowal ji, right, at a development cost of 13.5 करोड़ रुपए। तो where was India's first maritime simulation center? तो ये रहेगा Academy of Maritime Education and Training में, जो कि चेन्नई तमिलनाडु में आता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज विजिट टू राजस्थान फॉर द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ 1.22 लाख करोड़ रुपीस। तो मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। तो तीनों ऑप्शन यहां पर बिल्कुल ही सही रहेंगे, टेक अ नोट ऑफ इट। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स, फिर अभी रिसेंटली इंडिया का पहला AI पावर्ड पिलग्रिम इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर को इनॉग्रेट किया गया। कहां पर? तो ये तिरुमला टेम्पल में रहेगा, आंध्र प्रदेश में। ये बेसिकली क्या है, एक AI प्लेटफॉर्म है, राइट। AI
पावर्ड पिलग्रिम इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर है जिससे आपकी क्राउड मैनेजमेंट की जाएगी, क्यू मतलब लाइन की एफिशिएंसी प्रमोट की जाएगी, सेफ्टी, साइबर थ्रेट मॉनिटरिंग, इन सब के ऊपर यहाँ पे काम किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, अभी सितंबर में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा रिलीज किया गया 4th एडिशन ऑफ द चिल्ड्रन इन इंडिया 2025 ड्यूरिंग द 29th कॉन्फ्रेंस ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि चंडीगढ़ में हुआ। तो पूछा जा सकता है कि 29वां एडिशन कहाँ हुआ? चंडीगढ़ में। और चंडीगढ़ में कौन सा एडिशन हुआ वीजा वी, ये क्वेश्चन है तो 29वां एडिशन। करेक्ट स्टेटमेंट बताओ यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन देखें तो आपका ऑप्शन बी सही है, सिर्फ ऑप्शन सी सही है, ए गलत है, बी गलत है। अगर हम ए देखें, जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है ये डिक्रीज कर गया फ्रॉम 44 डेथ्स पर 1000 लाइव इन 2011 से 25 इन 2023। अब ऑप्शन ए सही है। बी की बात करें, इंडियाज अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट वाज एस्टिमेटेड एट 20 इन 2023 कंपेयर टू 30 इन 2022। नहीं, तो ये 20 नहीं था, ये आ जाता है आपका अंडर 5 का मोर्टेलिटी रेट एट 29 इन 2023, राइट। अब ऑप्शन आपका ठीक है, राइट। अब 3 ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया 8th एडिशन ऑफ द एनवायरमेंटल अकाउंट्स रिपोर्ट टाइटल एनवायरमेंटल अकाउंटिंग ऑन फॉरेस्ट ड्यूरिंग द 29th, जो भी हमने देखा कॉन्फ्रेंस ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि चंडीगढ़ में हुई। तो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज किया गया 8th एडिशन है? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा यहाँ पे रिलीज किया गया। एंड सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ ग्रो होता हुआ दिखा हमें? केरला स्टेट में सबसे ज्यादा ग्रो होता हुआ दिखा। Next, pick out the correct statement regarding the environmental recognition during the 37th of the UNESCO International Coordinating Council for the Man and Biosphere Program, जो कि है MAB प्रोग्राम, पेरिस फ्रांस में हुआ। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें तो आपका ऑप्शन ए सही है एंड ऑप्शन बी सही है, सी गलत है। तो कह रहा है कि 30 नए बायोस्फीयर रिजर्व्स यहाँ पर ऐड किए गए, हाईएस्ट नंबर इन 20 ईयर्स फ्रॉम 21 कंट्रीज। तो 30 ऐड नहीं किए गए हैं यहाँ पे, जो ऐड किए गए हैं वो कितने हैं? नई साइट्स 26 नई बायोस्फीयर रिजर्व्स को ऐड किया गया। इंडिया से कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि हिमाचल प्रदेश में, उसको यहाँ पे इस नेटवर्क साइट्स में ऐड किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। और इंडिया से 2 रामसर साइट्स ऐड की गई हैं, दोनों बिहार से हैं, गोकुल जलाशय एंड उदयपुर झील। एंड अब 93 यहाँ पर इंडिया में हमें टोटल देखने को मिलती है रामसर साइट्स। Next, mark the correct statement regarding the project inaugurated by Prime Minister Narendra Modi in Jashorgouda in Odisha। अगर यहाँ पर अगर हम ऑप्शन देखें ABC, तो तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल ही सही रहेंगे। Next, which of the following companies institutions are technology partners of BSNL's स्वदेशी 4G network launched by Prime Minister Narendra Modi? तो अगर ऑप्शन देखें तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट, अभी मेंटेनेंस कमांड ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, इन्होंने एक MOU साइन किया किस इंस्टीट्यूट के साथ? फॉर द कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एम्ड एट सपोर्टिंग द सस्टेनेंस एंड ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। तो वो है IIT रोपड़। नेक्स्ट, किस इंडियन कंपनी के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ने अभी इनॉग्रेट किया मोरक्को में एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को, राइट। एंड ये राजनाथ सिंह के द्वारा जो आके वहां पे इसको इनॉग्रेट किया गया। तो ये कौन सी कंपनी रहेगी? ये है टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड। एक और चीज याद रखेंगे, टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड धौलेरा में, जो कि गुजरात में है, वहां पे एक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैब्रिकेशन यूनिट को एस्टेब्लिश कर रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 69th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो कि 15 से 19 सितंबर तक हुई। यहाँ पे अगर हम देखें तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है, तो ऑप्शन 5 हमारा बिल्कुल सही आंसर है, जो कि इनकरेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। यहाँ पे नॉर्वे नया मेंबर बन गया ऑफ द IAEA, तो नहीं, नॉर्वे नया मेंबर नहीं बना है। नया मेंबर कौन सा बना है? वो है मालदीव्स यहाँ पे नया मेंबर बना है। नेक्स्ट आ जाता है, आइडेंटिफाई द कंपनी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैंसल द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ड्यू टू इरेगुलर लैंडिंग प्रोसेसेस। तो आइडेंटिफाई द कंपनी वो है दत्ता फाइनेंस एंड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड। इनका यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया ड्यू टू इरेगुलर लैंडिंग प्रोसेसेस। फिर आ जाते हैं, उस बैंक का नाम बताओ जिन्होंने इंडस्ट्री का पहला ₹E पर्सन टू पर्सन डिजिटल गिफ्टिंग कार्ड फीचर लॉन्च किया UPI पर। 1 से लेके 10,000 रुपए तक का कोई भी किसी भी अमाउंट का आप गिफ्ट कार्ड बाय कर सकते हैं एंड n नंबर ऑफ टाइम बाय कर सकते हैं, मतलब कितनी बार ही बाय कर सकते हैं। तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा फीचर लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम दैट इंटरनेशनल फ्रेमवर्क जिसने RBI के साथ अभी रिन्यू किया अपना स्टेटमेंट ऑफ कमिटमेंट को, ताकि जो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में उनको अपनाया जा सके। तो कौन सा वो इंटरनेशनल फ्रेमवर्क है? वो है FX ग्लोबल कोड। नेक्स्ट आ जाते हैं, मार्क द रिवाइज्ड मिनिमम नेटवर्थ रिक्वायरमेंट्स दैट सेबी सेट फॉर द कस्टोडियंस ऑफ सितंबर, जो कि रिस्क मैनेजमेंट को स्ट्रेंथन करने का काम करेगा। पहले ये अमाउंट 50 करोड़ था, जो कि बढ़कर अब 75 करोड़ हो गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस कैटेगरी को चूज करो ऑफ ट्रेडर्स जिन्होंने RBI ने जिनको परमिट किया इन सितंबर टू पार्टिसिपेट इन द रुपी नॉन डिलीवरेबल्स डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स इन द ऑफशोर NDF मार्केट। तो
वो कौन से ट्रेडर्स रहेंगे कैटेगरी के? वो है स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन सितंबर आरबीआई ने रिलीज की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डायरेक्शंस अकॉर्डिंग टू विच द डायरेक्शंस विल अप्लाई टू ऑल द पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स एंड पार्टिसिपेंट, जो कि बैंक एंड नॉन बैंक एंटिटीज रहेगी फॉर डिजिटल डोमेस्टिक डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन। एंड ये लागू कब से होंगी? 1 अप्रैल 2026 से ये लागू होती हुई दिखेंगी। नेक्स्ट पे आते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिवाइज नॉर्म्स ऑफ द क्लेम्स सेटल्ड फॉर द डिसीज्ड कस्टमर बैंक अकाउंट। डिसीज होते हैं जिनका निधन हो गया एंड उनके बैंक अकाउंट में या लॉकर में भी पैसा है, अमाउंट है, ज्वेलरी है, तो उनके लिए ये रिवाइज नॉर्म्स यहाँ पर आते हुए दिखे हैं। तो पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा सही है? बी सही है, सी सही है, ए गलत है। ए कह रहा है कि फॉर डिपॉजिट अकाउंट्स इट इज मैंडेटरी फॉर द बैंक्स की वो जो क्लेम है, जो पैसा है उसको सेटल करें इन विद इन 30 डेज। तो नहीं, 30 डेज नहीं, 15 डेज के अंदर उनको यहाँ पे सेटल करना होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ जिन्होंने प्रेडिक्ट किया इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट एंड 40 बेसिस पॉइंट से उसको बढ़ा दिया। पहले वो 6.3% प्रोजेक्ट कर रहे थे, लेकिन अब 40 बेसिस पॉइंट का ग्रोथ देखने को मिला है टू 6.7%। तो ये कौन सी रहेगी? ओईसीडी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंपनी ने अभी एक एमओयू साइन किया एचडी कोरिया शिप बिल्डिंग एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग के साथ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन के लिए इन शिप बिल्डिंग। तो ये है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा ये अभी अग्रीमेंट, एक एमओयू साइन किया गया। फिर आ जाते हैं, किस कंपनी ने अभी एलएनटी के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करी टू सपोर्ट द एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट्स को बनाने के लिए फॉर द इंडियन एयरफोर्स। तो वो कौन सी रहेगी? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बीईएल के द्वारा। Next, students, is our homework section. First question is rapid exercise. It was held where? Which edition was it? Held between whom? Then second, 5th edition of the Coast Guard Global Summit. It was held where? Who hosted it? Third question, then name that Indian naval ship that reached Singapore recently for a Pacific Reach exercise. Fourth question, who won the men's hockey Asia Cup and where was this held? Fifth question, tell me first dedicated women's sports channel was launched recently by which country in partnership with AWSN? And sixth question, students, tell me recently when do we observe Grandparents Day? Seventh, tell me when do we observe National Forest Martyrs Day? And eighth, when do we observe Hindi Divas? So these are your homework questions, students, and I need to see maximum participation from all the students watching this video.